Okay, all right. Okay, participants, what we are going to do today, in today's discussion, I will proceed further and I will share some important questions from Elizabethan age in the first half of the session. So, and later on, we will proceed further towards the mock session, towards the mock interview. And in case जिनका इंटरव्यू है हमें कोई पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन नहीं करते हैं, then we will end the session just after 40 minutes. Once we will discuss all the questions, all important questions, जो कि अभी भी आजकल के इंटरव्यूज का भी पार्ट है, and they're asking a lot many things from these ages. Yesterday, we were discussing some important things about William Shakespeare. My recommendation is, and like in these interviews, ongoing interviews of KPPSCs and PPSCs, the comedies of William Shakespeare and early comedies of William Shakespeare, they are very important. So participants, when I am talking about the early comedies, definitely William Shakespeare, being a human, he was not a mature person, so immature plots are there. So you need to understand early comedies mean the comedy of error, love's labor lost, and the two gentlemen of Verona. I'm sorry, I'm not feeling well today, so maybe that is the reason you are feeling a bit change in voice and the tone and tenor is a bit low. But the classes of interviews they're really important. So मैंने सोचा कि इसे हम कंटिन्यू लास्ट में करेंगे, स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, जिनके इंटरव्यूज है ना वो मुझे काइंडली अपने इनबॉक्स में मुझे एक दफ़ा ज़रूर बता दें। ग्रुप्स काफ़ी ज़्यादा हैं, वी आर हैविंग अ लॉट मेनी इंटरव्यूज ग्रुप्स एंड द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्लासेस के भी ग्रुप्स होते हैं, तो वो फिर ग्रुप्स को मैं ओकेजनली ही देखता हूँ, वंस इन अ ब्लू मून, या मैं उसमें सिर्फ क्लासेस की ही जो है वो डिटेल्स को पोस्ट करता हूँ। तो आप काइंडली मुझे एक इनबॉक्स में मैसेज लीव कर दीजिएगा ऑन माई पर्सनल नंबर। आई एम श्योर कि मेरा पर्सनल नंबर जिसमें मेरी डीपी है वो आप सबके पास है, इट्स माय पर्सनल नंबर। बाकी सब जो हैं वो पर्सनल नंबर नहीं है, वो इंस्टीट्यूट के पास होते हैं, वो कभी मेरे पास भी होते हैं, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, बट इट्स माय पर्सनल नंबर। इस पे अगर आप कर देंगे तो आई विल बी एबल टू manage up all the things accordingly. So when you are going to have your next interview, mock interview, I will plan it. Okay, early comedies, and then the second important thing is history plays. Well, हिस्ट्री प्लेस के बारे में जब भी हम बात करते हैं ना, तो हिस्ट्री प्लेस के बारे में हमें ये समझ में आता है कि जो सिर्फ हिस्ट्री की बात करती नहीं, ऐसा नहीं है। जो इसके सोर्सेज के बारे में बताता है, जो आपको ये बताता है कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे मुख्तलिफ है, जो आपको ये बताता है कि इस कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, जो आपको ये बताता है कि यूनिटी को राइटर ने कैसे मैनेजअप करने की कोशिश की है, जो आपको ये डिटेल्स बताने की कोशिश करता है कि किस तरह से जो है वो राइटर लेके चलता है और क्या वो यूनिटीज़ को अरिस्टोटल की दी यूनिटीज़ को फॉलो करता है, क्या इसके अंदर जो है वो हिस्ट्री प्ले के अंदर ट्रेजेडी और कॉमेडी के एपिसोड्स को मिस किया है या मिक्स किया है या मिस किया है, किस तरह से प्रोसीड फर्दर किया है। सो ये हिस्ट्री प्ले है, और हिस्ट्री प्लेस के मुतालिक डिटेल्स को आपने इन तमाम पर्सपेक्टिव्स को जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया इनको ज़रूर देख के जाना है, ठीक है जी। अच्छा जी, विलियम शेक्सपियर के बारे में, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट विलियम शेक्सपियर, you are not going to ignore the difference between immature and mature comedies. Remember one thing. Sometimes the commission they ask, what do you mean by immature and mature comedies? Definitely, when they are talking about the immature one, they are talking about the early comedies of William Shakespeare, and the mature one when William Shakespeare was considered a genius. Okay, so there are a lot many comedies like Merchant of Venus is one of them. As You Like It, is very important mature comedy by William Shakespeare. So you can take maximum references from these two comedies. Okay. इसके बाद जो है हमारे पास विलियम शेक्सपियर के अलावा जो है हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि विलियम शेक्सपियर ने फेमिनिज्म को किस तरह से सपोर्ट किया
या विलियम शेक्सपियर जो है वो ख़वातीन को कहाँ तक जो है वो इम्पोर्टेंस देता था। देखिए, विलियम शेक्सपियर के कामों को अगर हम पढ़ें तो हमें 2 चीज़ें नज़र आती हैं। बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था ख़वातीन की, और बाज़ मौकों पे उसने मेन से भी ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी है, ठीक है? अगर देखें, अगर हम इनकी विलियम शेक्सपियर के प्लेज़ के अंदर जो है वो ख़वातीन को देखने की कोशिश करें, तो हमें पता चलता है कि ना सिर्फ़ वो बड़ी इंटेलिजेंट हैं, बड़ी विटी हैं, बल्कि वो मेन से कहीं ऊपर हैं, ठीक है? सो हमें जो है वो इन तमाम चीज़ों को, कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो मूवमेंट थी, ये तो कहीं बाद में आई फेमिनिज़्म को लेके, लेकिन मर्चेंट ऑफ वीनस के अंदर जो पोर्शिया है, जिस तरह से वो अट्रैक्ट करती है बोसेनियो को अपनी इंटेलिजेंस के साथ-साथ, विट के साथ-साथ, मैनर्स के साथ-साथ, ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है जी? सो ये भी आपको जो है वो देखने की ज़रूरत है इन तमाम चीज़ों को। अच्छा, 5वें नंबर पे मैं बात करना चाहूँगा शेक्सपियर के दिए हुए हीरो के बारे में। अच्छा, ये हीरो मुख्तलिफ होता है। हीरो विलियम शेक्सपियर की जब हम बात करते हैं ना, इसकी प्रॉब्लम ये है कि ट्रेजेडी के हीरो की बात कर रहे हैं, कॉमेडी के हीरो की बात कर रहे हैं, या आप हिस्ट्री के हीरो की बात कर रहे हैं। जब हम ट्रेजेडी की बात करते हैं तो ट्रेजेडी के अंदर जो है इसने अपने कैरेक्टर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर पुट करता है। हमारे पास जो है एक ऐसा ऑर्डर है जो कि डेफिनेटली बड़ा इम्पोर्टेंट है। आई एम सॉरी, ग्रीक ट्रेजेडी के अंदर डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं, लेकिन जब शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की हम बात करते हैं तो ये एक ऐसी स्टोरी होती है जो कि सिंगल कैरेक्टर की स्टोरी है, और जिसमें अंदर सारे का सारा फोकस जो है वो हीरो के ऊपर जो है वो रखता है, ठीक है? शेक्सपियर की प्लेस के अंदर हीरो को जितनी रिस्पेक्ट, जितनी अज़मत ये देता है, उतना कोई नहीं देता। किंग लियर को देख लीजिए, बादशाह है, हैमलेट को देख लीजिए, शहज़ादा है, ठीक है? ओथेलो को देख लीजिए, जनरल है। ये सारे के सारे लोग कौन से हैं? रोमियो एंड जूलियट में देख लीजिए, आप इसके अलावा जो है जूलियस सीज़र में देख लीजिए, उसमें ब्रूटस को देख लीजिए, सीज़र को देख लीजिए, एंटोनी को देख लीजिए, कोरियोलानस में देख लीजिए। इसका जो हीरो होता है वो सेंटर में, एक ऐसा सेंटर में चमकता हुआ सूरज है, जो दूसरों को इक्लिप्स कर देता है, जो दूसरों उसके सामने जो है वो मांद पड़ जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे विलियम शेक्सपियर के बारे में, और मेरी अलबत्ता जो है वो आपको रिकमेंडेशन रहेगी कि आप इसके साथ-साथ बेन जॉनसन को इग्नोर ना कीजिएगा। बेन जॉनसन इस एज में बड़ा इम्पोर्टेंट था। बेन जॉनसन जो है उसकी बड़ी इज़्ज़त किया करता था ये विलियम शेक्सपियर। आप जानते हैं कि बेन जॉनसन के प्ले के अंदर इसने एक्ट भी किया, इसने परफ़ॉर्म भी किया, ठीक है? सो बेन जॉनसन जो है उसकी, इवन उसके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा थे बेन जॉनसन के ना। तो बेन जॉनसन को अक्सर औक़ात वो आपसे कह देता है कि कंपेयर और कंट्रास्ट करें बेन जॉनसन को विलियम शेक्सपियर के साथ जो है, अक्सर औक़ात आपको जो है वो बेन जॉनसन की फॉलोअर्स पे बात करनी पड़ जाती है। सो इन तमाम चीज़ों को जो है वो ज़रूर देख लीजिए। अच्छा जी, 7 नंबर पे मैं बात करना चाहूँगा कि आपको पता होना चाहिए, इस एज ने जहाँ पे बहुत सी चीज़ें आपको दी, वहाँ पे इसने बेकन भी दिया आपको, फ्रांसिस बेकन जो है वो। अच्छा, आपने वैसे तो ये अपने एमए या बीएस के सिलेबस में टाइम एंड अगेन आपने इस पे बात की होगी कि फ्रांसिस बेकन का स्टाइल, 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 स्टाइल। लेकिन याद रखिएगा, बेकन पे जब भी आप बात करने जाएँ अपने इंटरव्यू में, आपने ब्रीफ बात करनी है, और बेकन भी एक ब्रीफ सा राइटर था। बेकन की बातें बड़ी वज़नी हुआ करती थी, एंटीथेटिकल सेंटेंसेस को कहा करता था, लेकिन कौन-सी बातें थी, वो मुहावरतन ज़ुबानों को इस्तेमाल किया करता था, प्रोवर्बियल एक्सप्रेशंस हुआ करते थे उसके, ठीक है? तो ये तमाम चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है, आपको बताने की ज़रूरत है कि बेकन के स्टाइल के साथ-साथ उसका कंटेंट कितना इम्पोर्टेंट है। उसने जो है, बेकन हिट करता है क्रिटिकल थॉट को। बेकन बेसिकली आपको ये बताता है कि किस तरह से, जिस तरह से हम लोग घर के अंदर बैठे होते हैं, बेल नहीं दरवाजे पर जो है वो बजती, तो हम चौंक जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि कौन आ गया रात के वक़्त जो है। तो उसी तरह से इसकी जो राइटिंग्स हैं, वो आपको वेकअप कॉल देती हैं, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आप रिवाइज़ करेंगे इस एज में से। वैसे तो आप इस एज को एक्सप्लोर करना शुरू कर दें तो आपको बहुत से ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो मिल जाएँगे। बट आपको पता है कि हमारा फ़ोकस जो है, दैट इज़ कि हम अपने कमीशन के इंटरव्यूज़ जो हैं उनको देखें। तो कमीशन के इंटरव्यूज़ के लिए हम इन तमाम डोमेन्स को जो है वो एक्सप्लोर करेंगे, और ये सारी की सारी डोमेन्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत अहम हैं। ठीक है जी? अ, अब यहाँ से आगे चलते हैं, और आगे चल के हम कुछ मज़ीद क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं।
अच्छा जी। अब हम जो है वो अगली जिस एज पे मैं बात करना चाह रहा हूँ या जिस पर्सनैलिटी पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ड्राइडन है। ठीक है, ड्राइडन के ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ। सो माय फर्स्ट रिकमेंडेशन इज you need to understand why Dryden is considered a very important character, a very important person in the age of new classicism. वेल इन इटसेल्फ ही जब हम क्लासिसिज्म की बात करते हैं, एक एज बड़ी डिफरेंट सी एज है। जो कुछ हमारे पास चल रहा होता है, पहले एज जो हमारे पास रेनासांस है, रेनासांस के लिए एक रिवॉल्ट है, उसके लिए एक रिएक्शन है। सो आप ड्राइडन को इन पर्टिकुलर देख के जाएंगे, एलिजाबेथन एज के साथ जो है वो जॉन ड्राइडन का कंपैरिजन करके जाएंगे कि क्या है इसके इस एज के अंदर जो लिखने वाले हैं वो किस तरह से ड्राइडन से मुख्तलिफ लिखते हैं या ड्राइडन की तरह का लिखते हैं। ड्राइडन की सेटायर को जो है वो देख के जाएंगे कि ड्राइडन जो है वो एक सेट्रिस्ट के तौर पर कैसे परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा आप इसके हीरोइक कपलेट को देख के जाएंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इसने हेल्पपुट की, लोगों को शामिल किया हीरोइक कपलेट के अंदर। और इन्होंने, आप जानते हैं कि हीरोइक कपलेट एक मूवमेंट थी, एक ऐसी मूवमेंट थी कि जिसने पूरी की पूरी पोइट्री के अंदर एक तहलका मचा दिया था, ड्रामा अब सारे का सारा बदल गया था। ड्राइडन ने हीरो कपलेट को न सिर्फ फॉलो किया था बल्कि उसने इसको मूव ऑन भी किया था रिदम और ब्यूटी के साथ जो है। ठीक है, सो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो आप देखेंगे। इसके बाद न्यू क्लासिसिज्म में रिस्टोरेशन कॉमेडी को आप इग्नोर नहीं करेंगे। रिस्टोरेशन कॉमेडी जो है, अच्छा बाजुकात ना हम सभी लोग जो हैं, मैं अक्सर कहा करता हूँ, बड़ी जल्दी जो है वो सेल्फ ब्लैकमेल हो जाते हैं कि इन क्वेश्चंस को शायद हमें देखने की जरूरत नहीं है। तो आप इनको जरूर देख लीजिएगा, रिस्टोरेशन कॉमेडी और बाकी सारी की सारी चीजें। ये वो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं इन्हीं क्वेश्चंस के साथ और एक आखिरी क्वेश्चन जो है वो मैं आपके साथ, एक नाम मैं आपको रिकमेंड करूंगा विलियम कॉन्ग्रीव का, कि विलियम कॉन्ग्रीव को और इसकी तमाम की तमाम डिटेल्स जो हैं उसको जरूर देख के जाइएगा कि विलियम कॉन्ग्रीव जो है वो अगर कॉमेडीज लिखा करता था तो वो कैसी कॉमेडीज होती थी, और बाकी जो इसके मुतालिक जो डिटेल्स हैं उनको आपने जरूर देख के जाना। ठीक है जी। सो दैट इज समथिंग फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे, और आपने इन चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। अच्छा, जितने लोग हमारे साथ हैं जिनके इंटरव्यूज रहते हैं उनका बेसिकली एक नया ग्रुप जो है वो जनरेट करना मकसद है, क्योंकि हमारे पुराने ग्रुप के अंदर जो हैं बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिनके इंटरव्यूज हो चुके हैं। ठीक है, सो फीलिंग के उनके लिए अब शायद जो है वो इंटरव्यू से रिलेटेड डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा उनको ज़रूरत नहीं है। तो और बाजू का जब हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जो हैं जिन जिन के इंटरव्यूज हमने स्केड्यूल करने हैं वो अपना नाम जो है वो पुट कर दें, तो अब बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं कि जो शायद उसमें कमेंट नहीं कर पाते हैं या चैट की वजह से वो ऊपर चला जाता है। वो ग्रुप एज इट इज़ ही एग्जिस्ट करेगा, लेकिन हम जो हैं वो एक नया ग्रुप बनाना चाह रहे हैं जिसमें बेसिकली हमारा मकसद ये है कि उन्हीं लोगों को लिया जाए जिनके इंटरव्यूज रह गए हैं। ठीक है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट आप अपना नेम जो है वो लिख के भेज दीजिएगा ताकि आपको उसमें ऐड कर दिया जाए, और अगर कोई कंसर्न, कोई क्वेश्चन होगा तो उस ग्रुप को मुझे पता होगा कि इसके अंदर हमारे पास सिर्फ नए पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके इंटरव्यूज हमारे पास अभी होने हैं, तो उन्हें फिर हम जो है वो उस लोक में ले लेंगे। ठीक है, उसमें सिर्फ वही लोग होंगे कि जिनके इंटरव्यूज अभी होने वाले हैं। ठीक है, जिनके हो चुके हैं वो प्रीवियस ग्रुप में स्टे कर सकेंगे। ठीक है, और जैसे ही फिर हमारे नए इंटरव्यूज जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे ताकि हम उन्हीं लोगों के ऊपर हम देख सकें कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनके इंटरव्यूज हैं, उनके मॉक सेशंस को प्लान किया जा सके। अच्छा जी, दिस इज समथिंग, अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछा जा सकता है, अदरवाइज वी आर प्रोसीडिंग फर्दर एंड वी हैव मिस वासिफा सफदर विद अस। Miss Wasifa, you are there. You are requested to unmute yourself so that we may proceed further with your mock interview. Okay, Miss Wasifa, you have unmuted yourself, or you? Yes, sir, I have unmuted myself. I'm here. So I'm sure that you're good, Miss Wasifa. Yes, sir, Alhamdulillah. I am perfectly good. Okay. So ready for today's mock interview? Yes, sir. When you have your final interview, Miss Wasifa? Sir, I have not received any message or mail yet. I don't know. But I'm sure that you on daily basis you are checking the PPSC's website for that.
Yes, sir, I am daily checking it. That's great. So, Ms. Vazifa, proceeding further, as usual from your introduction, please introduce yourself. Okay, sir. Assalamu alaikum, everyone. I am Vasfa Sapnar, daughter of Sapnar Ali, and all my education is from public sector. After my graduation from Government Postgraduate College Gujranwala, I opted for Bahauddin Zakaria University, Multan for my masters in English, as my family has been moved here. And I completed my masters in 2014, and these days I am serving in SCD, and I am designated as EST English, and I am teaching to secondary classes. And apart from it, I am also working as an sub-examiner in BISC Multan since last 3 years. And apart from this, I am also a student of MPhil English Literature, Okay, and that's great. I am Thank you so much. okay, Thank you so much. So, you are doing your MPhil. MPhil yes, stands for what, Ms. Vazifa? Masters of Philosophy. Okay, that's great. So, you have chosen MPhil. So, it is MPhil in literature or in linguistics? This is in literature, and these days I am working on my research. What is the topic of your research? The topic of my research is eco-linguistics discourse analysis of Coal and Chalk by Shadab Aziz Hashmi. She is a diaspora poet, Pakistani American poet, and this is a collection of hers that I have chosen for an eco-linguistic discourse analysis. What is your research gap? My research gap, uh, you mean limitation or delimitation, I think. No. What is the research gap that you are trying to fill? Okay, sir, I am trying to fill in our Pakistani literature and in Pakistani studies, we have not paid as much attention to the ecological issues as we should have given to the ecological issues. And other than this, this is the Pakistani diaspora poet, and we have worked the least on our poets. If On our poets from any point. So it would be good for our Pakistani students and the researchers to have a Pakistani poet work on, and other than this, on work on the ecological issues that are present in our society, and how to advocate, how to propagate a discourse to In save a our single line, ecology. Ms. Wasifa, what Okay, will sir. be the benefit in the world in the age of research if you are given the chance to complete your research? So, what is the outcome of your research? What the students of literature and linguistics will get benefit from it? Outcome of my research would be awareness among the students and the common masses regarding the ecological issues present in Okay. Pakistan And discourse. how many ecological issues you are covering in your dissertation? Actually, my thesis is is working on a high Sapir-Whorf hypothesis that we live our language, our thoughts are made and constructed through our language. So I am trying to portray that how we are depicting our ecological issues in our language, Fair and enough. how we should. Okay, fair enough. What is your sample size? Actually, the book comprises 65 points, but these are the 5 parts in the book, and I have taken from every part 2 to 3 points. And which sampling technique you are following? Uh, Sampling techniques, it would be a textual analysis. I am right now working on the third chapter. Okay. And what is your population size? So, population size, I am not conducting any interviews or surveys. It would be a textual analysis. So maybe your population size is
All the books that you are covering? Sir, all the points that I am covering, So, selected points from the 5 parts of the book. okay. So you are going for mixed method approach, qualitative or quantitative? Sir, it is a qualitative. It is? It is a qualitative approach Okay. And why qualitative? Why not quantitative? because in quantitative approach you have to provide, I think, the numerical data, the statistical analysis, and I am not good enough in that area, Hmm. so I chose the qualitative one. What is the difference between limitation and delimitation, Ms. Wasifa? So delimitation is that I am taking only one book, one poet, and the future researchers can take more books. And limitation is that I limitation means I have not given, means if I wouldn't be able to give much time, if I wouldn't be able to take more the books and more the, you can say, if I wouldn't be able Hmm. Maybe to you take need more to poets also. revisit the very basics of the limitation and delimitation, because something that you're explaining is not up to the mark. Okay, Sir, so limitation okay, is, okay. yes, you want to say something? Sir, I am pretty sure about the delimitation. Delimitation is that I have taken only one book, only one poet, and future researchers can take more. And I am not sure about limitation. And that is the reason I am saying that you need to revisit it again. I'm not saying whatever you have uttered that is wrong. I'm saying you need to revisit it. Yes, Okay? sir. Because Sure, I'm sir. talking about the difference. I'm not demanding the definitions here. Okay? Okay, Okay, okay. Wasifa, you have, I'm sure that you are following a research paper or research dissertation. What is your model paper, model research that you are following? Sir, And format. how many, no, that you are following, and how many research papers you have read so far on this topic that you are covering in your MPhil? Sir, before this interview first, I was daily visiting and reading different papers. I have almost, you can say, 30 plus in this scenario, and means I can't tell you the right number, but before this interview first, I was daily working on some new paper each day. Okay, so what do you know about impact factor? What is impact factor? And have you published any research article so far? No, sir, I have not published any research article. What is the difference Right. between, because you're working on the research, so what is the difference between X, Y, and W category journals? Sir, X, Y, and W category journals actually are the journals in some of them are the paid journals that you publish after paying something. I was told and I was taught, but right now I'm not able to Okay, recall that. okay, can you define for me what is the definition of research? What is research? Research is a scientific, systematic analysis or study of the given data in order to set some facts and to give some rules regarding any problem. Okay, all right. So yeah, that's true. That's perfectly fine. What is the difference between findings and hypothesis? So, sir, hypothesis is after once you have find out the problems, uh, after that Mm-hmm. you give 2 to 3
Two to three, you can say, assumptions that would lead you to prove that problem statement of yours. Okay. And findings are actually the final result of your research that you give at the end of your research work. Okay. So how you're adding references in your research? How am I reading references? How you are adding references in your research? Mostly, I am adding the last name of the referential person and the year of his or her publication. As you can say, the last name can be John, then 2016, 2017 would be the date of the publication. Okay, so you are not following any proper software Sir, for that. You are not following EndNote. You are not following Zotero. I think it is the within text reference that I have told to you. And this is according to the APA style that and APA actually stands the for what? American Psychological Association, that is a writing format for the research work and the dissertation work. Okay. And can we follow the APA style, APA formats in our daily life as well? Or this format is specifically for the research or scholarly journal articles? Sir, in some sense, it is specific for the articles, but in daily routine, we are never saying that I am giving this heading of 16 font size and I am giving this heading of 14. Mhm. So means in the heading Okay. sense, this is for specific, but when we are using the soft medium for writing, maybe we can use it. So when for the very first time the APA became involved in journals and all the things? I am not sure about that. And Mhm. Okay, so I'm sure that when we are talking about APA, you know that there is some particular reference style, and is there any difference between APA 6 and 7? no, sir, I am not sure. Yeah, I'm waiting for the answer. Sir, I am not sure about what is APA 6 or APA 7. Okay, just leave, these are the basically formatting, APA 6. And when we are talking about APA 6 or 7, definitely these are the writing styles that we use for the books. So the major difference is not there. Okay, that's great that you are conducting your research. So what is the name of last article, research paper that you have covered, that you have read on this topic? I have covered an eco-linguistic discourse analysis of Shano Ashby's Think Fall Apart. Think Fall Apart. Okay, Ms. Vasifa, that's great. Uh, can you just let us know about your research questions? How many research questions are there in your research? Sir, I have three research questions in What is the my first book. one? The first one is how is the text of Cole and Chalk a depiction of ecological discourse? Second one? How is explored association of culture and ecology in the text of Cole and Chalk? What is the definition of culture? Culture is actually the way a group or a nation or a community is living, is conducting the beliefs, the rituals, all the things that a group is or a community is following. Okay, that's great. Wishing you good luck, and I'm sure that you will proceed further with your research, inshallah, and you will produce a lot many research papers from this research. Talking about the literature. So,
What is the name of your favorite writer from literature? So my favorite writer in literature is Robert Frost, an American poet, and Mhm. Hemingway, American poet and novelist. But I am interested in him as a novelist, and my favorite dramatist is the modern dramatist Henry Gibson. What is the difference between modern drama and the ancient drama, the classical drama? In the classical drama, mostly the main characters were the from the ruling class. They were the princes, and other than this, so we were following the classical rules for the drama as the Do you unity know of about the basic elements of the modern drama? How many basic elements of modern drama are there? uh, I'm not sure, but modern drama actually takes into account the you can say very the characters who belong to the common class and Fair enough. to Fair enough. account the So matters that are not. plot construction remains the same in classical and modern drama. No, plot construction doesn't remain the same uh, because in the modern sense, we not necessarily follow the all the unities. We not necessarily somehow hamartia is there. Hamartia is there, but plots are flexible from the past times. Okay, can you share some lines from Robert Frost, the poem that you have? Maybe you remember some lines because Robert Frost is your favorite poet. So I read in my graduation after apple picking, and the Mm. lines my long pointed ladder is sticking through a tree towards heaven still, and there is a barrel that I didn't feel. These are the beginning lines. And I Mm. also like the line which depicts maybe the woodchuck has gone, maybe he was able to tell, is it the common sleep or the Do you woodchuck? feel they like Robert Frost is talking about something? There's a sort of conflict in the very poem after apple picking. So, is there any conflict? By the way, what is the definition of conflict? Sir, there is a distortion in your voice. I Yeah, I'm talking about what is the definition of conflict? Conflict. so conflict is conflict can be the conflict that is present in your person, that you want to do one thing and the other thing is happening to you. And conflict may be Mm. between two persons, and in this poem the conflict that is depicted is that the poet wanted to harvest the crops of his aspirations, of his wishes, and that Mm. crop is an abundance, but now his energies are not sufficient for those wishes Thank you to. so much. Thank you so much. It was a wonderful discussion, Ms. Baswa. We are done with the formal discussion. Well done. Overall, the interview was wonderful. Your introduction section was good. All right, we couldn't ask the questions about SAD and your ESC English thing. You need to prepare something about your class and how you're teaching, and the teaching methods should be there on your fingertips. Well, talking about your MPhil, you have, in perfectly fine manners, defended all the questions. So when you're going to mention your research, when you're going to talk about your MPhil, definitely all the questions will be related to your research. Okay. So my recommendation is do revisit all those areas that you have prepared for your research, though the answers were there, but because I haven't the hard copy of your thesis, but in your actual interview, the hard copy will be there. Okay. So revisit all the questions that are related to your thesis, your dissertation. Okay. Sir, but I am still working on it. I am working on the third chapter. Means my So degree would then be complete March 23rd. there's not a big deal. You have mentioned that you are doing MPhil and you're working on a research. That is Yes, sir. important here. So they're going to Yes, ask sir. you the questions from your research.
Okay, sir. so the questions from the research will be there, and definitely you need to memorize the samples, sampling techniques, and the population size, types, and all the things, and how many softwares you're applying for that, and all the things should be on your fingertip. Okay, Yes, the sir, I have research gap noted. should. Okay, that's great. Overall, the introduction was good. You need to work. You haven't received your schedule as yet, so you need to work more and more on your fluency. When you are uttering, when you are answering the statement, the questions, the answer, the content is wonderful, but the delivery style needs improvement. Okay. Overall, the introduction, overall the hobbies and the research and all the questions, the answers were very well, but the pronunciation and the delivery style needs improvement. Okay. Okay. So with Okay. this interview, we can touch between 68 to 70. So the minimum and the maximum range is this. And I'm sure that inshallah आप बड़ी आसानी से इसको improve कर सकते हैं. ठीक है जी? In- Okay, sir. ओके जी, आज हमारे पास एक ही इंटरव्यू था. अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अदरवाइज हम अपनी डिस्कशन को यहीं पे कंक्लूड करेंगे. और कल का जो स्केड्यूल है वो मैं अपडेट करूंगा आपके ग्रुप के अंदर. बट जिनके इंटरव्यूज रहते हैं या इंटरव्यूज अभी होने हैं वो मुझे इनबॉक्स में काइंडली एक मैसेज लीव कर दें ताकि मैं वो प्लान कर सकूँ, या आप अपने ग्रुप में भी बता सकते हैं अभी. सो होप टू सी ऑल ऑफ यू इंशाल्लाह टुमारो. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. खुदा हाफिज.